This factory produces 160,000 footballs per month. Bola Gema Pakistan is in Sialkot, a city that produces most of the world's footballs, nearly 70%. And even as team sports have come to a standstill during the pandemic, these manufacturers kept business going. हम पिछले 100 साल की इंडस्ट्री को लेके आगे चल रहे हैं, जिसकी वजह से हमारी परफेक्शन ऑफ स्किल्स जो हैं वो बहुत ज़बरदस्त हैं। For 13 years, Wasim Shahbaz Lodhi has been running this factory. It all starts at this machine, which creates sheets out of hot rubber. They are cut into a round shape and form the bladder or inner lining of a football. Next, the bladders are inflated and placed into metal steam machines where they bake for a few minutes, hardening the rubber. In another part of the factory, workers cut patches for the ball's external shell. Leather was once used to make the outer surface, but it can soak up water, so factories now use a synthetic substitute. Each ball is made of 20 hexagons and 12 pentagons, and there are several ways of putting them together. जो ट्रेडिशनल तरीका है वो हैंड स्टिच, जो बहुत पुराना फुटबॉल तैयारी का तरीका है, जो कि हाथ की सिलाई से बनता है, और ये तकरीबन 100 साल पुरानी इंडस्ट्री हो चुकी है पाकिस्तान में। और एक वक्त था कि हैंड स्टिच का बॉल पूरी दुनिया में बहुत पॉपुलर था। But that process is slow and costly, which is why Bola Gema has changed with the times. और अब ट्रेनिंग और जो लोअर एंड के बॉल्स हैं वो मशीन स्टिच में बनते हैं, और जो हायर एंड बॉल हैं वो थर्मो बॉन्डेड के मैकेनिज़्म पे तैयार होते हैं, जिसमें कि बॉल में सिलाई नहीं होती और वो पूरा बॉल बॉन्ड किया जाता है मुख्तलिफ जदीद मशीनों को इस्तेमाल करके। Saida Bibi works on the thermal bonded balls. It's like putting a puzzle together. She refers to a diagram and then joins the different pieces by hand using a special glue. Next, the ball is placed in here and the inner lining is bonded on. ये जो है ना मेरे पास आ गया शेल बन के, दोनों शेल आ गए हैं जो इसके अपोजिट, दोनों को जो है ना मैंने मशीन के अंदर एडजस्ट करना है, और एडजस्ट करने से पहले इसका मैंने वज़न करना है। वज़न जो है ना मुझे चाहिए इसका 420 से 440 के अंदर, तो इसका इस वक्त 433 आ गया वज़न। That's the perfect weight for a FIFA-approved ball, which can sell for over $100 in the US, more than the monthly wages of some workers who make these balls. हम लोग 100% एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंपनी हैं, और पूरी दुनिया में हम फुटबॉल इस वक्त सेल कर रहे हैं। हम फीफा के लाइसेंसी हैं, और टॉप क्वालिटी फीफा प्रो क्वालिटी प्रो बॉल हम अपनी फैक्ट्री में बनाते हैं, जो ज़्यादातर जर्मनी में, स्पेन, हॉलैंड, बेल्जियम में फ़रोख्त होता है। Ahead of the last World Cup in 2018, Pakistan exported over 37 million footballs across the globe. Until today, the industry remains a major source of income, with at least 1,000 football factories in Sialkot alone, employing nearly 60,000 people. But during the pandemic, many closed down. फुटबॉल की डिमांड कोरोना की वजह से बहुत कम हुई है, क्योंकि प्लेग्राउंड्स बंद हैं, मैचेस नहीं हो रहे, लोगों को अट्रैक्शन नहीं है, उनके पास खेलने की जगह नहीं है, तो नेचुरली जो बायर्स हैं उन्होंने भी ऑलमोस्ट 70% तक जो प्रोडक्शन है वो कट कर दी थी। But Wasim has been looking out for his workers. 1.5 से 2 महीने तकरीबन 3 महीने से घर रहे हैं। तनख्वाह सानों ने बोला कि माले ने दिया सन, परेशानी वाली कोई गल नहीं सी बनी सानों। These days, Bola Gema has its eyes on the prize, the 2022 World Cup in Qatar. It has already started manufacturing balls ahead of the event, but before they are exported, the footballs go through one last stress test. कम से कम 2000 शूटर लगाते हैं, फिर इसको देखते हैं इसकी सिलाई तो नहीं टूटी, वैक्सिंग तो नहीं पड़ी, या बाल डी शेप तो नहीं हुआ। Machines then deflate the balls so that they can be easily packed and shipped off. And even as the pandemic drags on, Wasim hopes that the football industry will bounce back. और अभी देखने में आ रहा है कि बाहर भी हमारे कस्टमर्स ने और जो क्लाइंट है उसने रियलाइज़ कर लिया है कि कोरोना के साथ हमें प्रिवेल करना है, तो अब हमारे पास नई इंक्वायरी आना शुरू हो गई है, और हम उम्मीद कर रहे हैं कि जो कोरोना डिस्पाइट ऑफ द कोरोना पेंडेमिक हमें ऑर्डर्स जो हैं वो मिलना शुरू हो जाएंगे, और क्वांटिटी जो हमारी 70% तक कम हुई थी वो ग्रेजुअली बेहतर होना शुरू हो जाएगी, और हमें फैक्ट्री बंद करने की नौबत पे नहीं